guys and welcome back to my channel. So today we're gonna do something really fun. I'm gonna take up a challenge which I think I have invented, but internet is huge and there are a lot of creators, so I think शायद क्या पता किसी ने पहले भी करा हो. Anyway, so the challenge that I've taken is I'm gonna use all the colors in my eyeshadow palette. Now you can do that just for your eyes if you want, or you can do like face art in your entire face. And I'm somebody who loves a good challenge. I love trying to push my own boundaries. So I have chosen a palette which has 35 shades in it. So this is the Morphe 35B palette, and yeah, it has all sorts of bright shades which I absolutely love about this palette. Pretty much why I got it. It's gonna be a lot. I really don't think कि सिर्फ eye look पे 35 colors डालना would be enough. So would be enough? Would be too much. So I'm gonna probably attempt a face art. I've been looking on Instagram for like inspiration and I found a lot of looks, but I don't think they necessarily go together. However, I do have something in mind, so please keep on watching to see how I go from this pretty decent base plus eyebrows to, I don't know, a crazy mess. Yeah, let's get started. ओके सो मैंने स्टार्ट किया है एक न्यूड पिंक कलर से एंड आई हैव जस्ट अप्लाइड इट ऑल ओवर माई लिड. एंड ये बस आपका स्टार्टिंग कलर है, ये ज़्यादा दिखेगा नहीं. देन आप एक येलो शेड लेंगे एंड देन आई एम जस्ट गोना पुट इट इन माई इनर कॉर्नर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेनबो आई लाइनर लुक. एंड आई नो रेनबो बहुत प्रिडिक्टेबल है, बट वॉट डू आई डू विथ 35 कलर्स. नेक्स्ट आफ्टर द येलो आई एम गोना पुट सम ऑरेंज एंड विंग की शेप में हम उसे एक्सटेंड करेंगे टिल द सेंटर ऑफ योर लिड, almost till the center or a little bit more. Then hot pink layer, and then we've extended the wing and we're going to finish it over the lid, so just towards the end of the lid. Then I take a purple and then I make the winged part of the wing liner, and I think the color gradation, I think it looks really nice. So for my waterline now, like underneath the waterline, I'm going to start with mixing two greens. And green next to that yellow, like a light color next to the yellow, looks really nice. Next is a light blue, and then followed by a dark blue which we're going to join with the wing that is outside. And I think this is a really cool like rainbow eyeliner look. Uske baad what I'm doing is just making the boundary of the top liner with black so that you can still see the rainbow underneath it. ओके सो अब मैं सोच रही थी कि मैं फेस आर्ट के लिए क्या करूँगी. सो आई केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग रेनबो टीयर्स, एंड इट्स नॉट इवन लाइक अ टीयर थिंग. आई थिंक इट्स लाइक जब वो पेंट्स गिरता है कभी ओवरफ्लो हो गए कैन से, दैट्स द काइंड ऑफ लुक आई वेंट फॉर. एंड आई जस्ट ट्रेस्ड द होल टीयर ड्रॉप थिंग विद माई आईब्राउ पेंसिल, एंड देन आई एम गोना स्टार्ट एकदम आउटर कॉर्नर से विद अ लाइट ब्लू कलर. So once that is done, I'm adding some depth by using a darker blue color. And of course, जैसे आप एक side करोगे, keep the same thing on the other side as well. But your tear का जो proportion है, that can be different. You don't have to make it exactly symmetrical because it just looks too perfect, and that's not what you want. Okay, so next up, we're gonna go inwards and we're gonna add a lighter green to begin with. What I'm going to do is मैं basically एक ombre है, मैं उसे inverted ombre कर रही हूँ. तो I start with the light on top and then I go towards a darker shade of the same color towards the bottom. And then उसमें और depth लाने के लिए what I do is I go for a shade that's in between the darker and the lighter shade and just put it on the edges, उसके side पे, उसके curves पे, so that there's some depth and there's some like gradation that you can see. You're going to hear the word gradation a lot, I think. Okay, so मैंने उसमें एक shiny सा green डाला just to make it pop a little bit, and then I went towards my pinks. So this is basically me trying to do rainbow tears, rainbow drops, pretty much that. So a peach, then a pink, and then and then a purple, and that's what like the rainbow tear looks like. Okay, so uske baad after the yellow we're gonna add some orange because that's like the darker version of yellow in my head at least for now. Then we go for a darker orange after that, almost a vermilion red, and that's what I'm gonna use as the end wala color. And that kind of concludes my rainbow full tear. Abhi मैं क्या कर रही हूँ, I'm just making
the whole thing pop and look a little bit more 3D, if you can say so, by adding thoda sa pink holographic sa glitter. Then I'm gonna add a yellow glitter on the yellow wala area, jo yellow orange wala area hai, just to give it some depth. And also I know because we're using eyeshadow and not creams, it can get very messy, so all you have to do is just clean it up with some concealer or foundation and your trusty beauty blender and you'll be good. इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आउटलाइन कर दिया अपने टियर को विद द सेम ब्लैक लाइनर एंड नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग द स्पेसेस बीच में सो दैट इट लुक्स वेरी डिफाइंड. उसके बाद मेरा क्रिएटिविटी प्रीटी मच ख़त्म हो गया था तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू गो विद द होल drop wala theme all over my face. So I'm going to put it on my forehead the way I've done right now. Going to go for the same kind of shading, just using the different colors in the palette. I wanted to use almost everything, so that's why I'm going to do it on my forehead. Later I'm going to move to my lip as well. And I think because of this, मैंने mostly जो बचे हुए colors थे वो use कर लिए, which I think worked really well, at least in my favor. And yeah, बस मैंने अभी green लिया है, उसमें थोड़ा सा turquoise ग्रीन टाइप का मिक्स किया है एंड देन आई एम गोना फिनिश इट विद अ ब्लू एंड आई थिंक दैट ऑल्सो लुक्स रियली नाइस. आई मीन व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट एंड इफ यू आर डूइंग लाइक अ रेनबो थीम थिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन के साथ ग्रीन ही पेयर करो. यू कैन गो विद अ कलर दैट्स going to complement it really well, which is why I chose the orange and the yellow, the pink and the purple, the blue and the green, and I think that just works really well. उसके बाद pretty much आपको सेम ही स्टेप रिपीट करना है. मैंने ब्लैक से उसे आउटलाइन कर दिया है. नाउ आई एम मेकिंग द सेम ड्रॉप इफेक्ट अंडर माई लिप्स एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू लुक प्रीटी नाइस. सो मैंने इसमें क्या किया, मुझे नहीं चाहिए था बहुत सारा कलर. आई जस्ट वेंट फॉर अ लाइटर पिंक, एडेड अ हॉट पिंक एंड देन उसके ऊपर आई एडेड अ येलो. एंड जब आपका वो येलो और पिंक मिक्स हुआ ब्रश से विदाउट इवन एडिंग अ कलर, यू हैड अ ग्रेडियंट विच वॉज ऑरेंज एंड दैट्स व्हाट हैपन्स व्हेन यू मिक्स दीज टू कलर्स. Okay, so outline वगैरह कर लिया. Now I've put white eyeshadow all around the tear and the drop just to make it pop a little bit more and for it to look a little bit more animated. लेकिन हमें उसे पूरा white पे नहीं छोड़ना है. So we're going to like make it a little more blended per se to your skin later. अभी मैंने इसके ऊपर white liner से आखिर में बस उसके highlight के लिए, थोड़ा pop के लिए उस पर white डाला है. And then pink आई शेडो लेकर मैंने उसे ब्लश की तरह यूज़ किया है ऑल ओवर माई फेस एंड आई थिंक इट लुक्स प्रीटी डिसेंट एंड आई थिंक या प्रीटी मच इट. उसके बाद जो हमने ऊपर आईलाइनर लगाया था, जहाँ पर भी हमने आउटलाइन किया है, उसे मैं ब्लैक आई शेडो से इन्हांस कर रही हूँ बिकॉज वो आई शेडो की वजह से थोड़ा सा डल हो गया था. बट दैट हैज़ एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर मी. अभी मैं आईलाइनर के ऊपर आई एम क्रिएटिंग अ स्मोकी इफेक्ट एंड देन एडिंग अ पर्पल विच आई थिंक लुक्स रियली कूल एंड रियली कम्प्लीट्स the whole look, puts it together. And yeah, that is about it for the eyes. इसके बाद just to buff it out, I'm going to add a light pink and then buff out the purple so it blends into the rest of my skin and doesn't look very patchy. I'm going to use a nice porcelain sort of a shade to highlight my brow bone and also the center of the lid where I've put the purple. And yeah, that is pretty much the completed look. I think it was so much fun to just do like some face art and like something creative, and I just hope you enjoyed it. That was it for the challenge. I used every single color. ठीक है, कुछ की quantity थोड़ी कम थी, थोड़ी ज़्यादा थी, but I think this turned out pretty cool. Let me know what you think about it in the comment section below, and I'm gonna see you on Sunday next. Bye.